In the first class, we have talked about like mutations, what are mutations actually, and we will be specifically talking about DNA mutation or RNA mutations. So a mutation is any sudden change occurring in hereditary material. We have talked about this in detail, harmful, beneficial, and neutral, and we can classify. So we can classify gene mutations based on three basic properties, like molecular nature. We can classify mutations on their molecular nature, on phenotypic effect, on causative agent. So these are the basic classes of mutations over which we can classify them. So for molecular nature, the base substitution can occur, and that is alteration of single nucleotide. Insertion deletion may occur, and this insertion and deletion may be frame shift and so on. So usually changes in the reading frame, altering all amino acids encoded by codon following the mutation. So basically, we were talking about mutations, different types of mutations. You already know very well the basic classes of mutations, and first of the class and the first of the type within the molecular sort of nature of mutation is base substitution. And base substitution is actually alteration of single nucleotide and then insertion and deletion. That this will only change the nucleotide, means the nucleotide will be not missing, or addition of nucleotide will not occur here. This will only change this, the type of nucleotide here in the base substitution. In insertion and deletion, the nucleotide will either be deleted or inserted, and this will cause frame shift mutation, means the protein, the frame, well, the reading frame will change. And after that, the insertion and deletion may also be in-frame insertion and deletions, and that is three nucleotides at different locations are one of the codon is deleted or added within a sequence. So that will be in-frame insertion and deletion. That means that will not change the overall frame of the protein. And next is this is important, if this is double-stranded DNA, this one is double-stranded DNA, and somehow somewhere T is replaced with C is replaced with the T, and sorry, the C is replaced. Now C, you can see the two strands. Now this strand, when it replicates, it will be having C will be converted into, and C will have this will bind with G, and only this allele will change, and the half of the DNA will not change. And after that, we have talked about transversions and transitions. Transversion means purines converted into purines, and pyrimidines they converts to pyrimidines. So if you can see this diagram shows that transversions means conversion from purine to pyrimidine, or from pyrimidine to purine must be more common, but in actual, purine to purine and pyrimidine to pyrimidine, they are more frequent. This is not like the purines will be converted into pyrimidine, will be converted into purine. This will less often, in contrast with the diagram that has been shown. In actual, the purine converts into purines, and pyrimidine converts into pyrimidine more often. And after that, the wild type mutation, we have already talked about wild type mutation. They are more common, the common phenotype is the common phenotype is the wild type mutation phenotype, the wild type, and in a population, the more frequent in the population will be wild type. Like considering black hairs here in our region will be wild, and brown or blonde will be that will be mutant. But in a population where a whole of the population is blonde or black, brown, so in that population, black hairs will be
mutant. So this is actually contextual term, and several types based on the phenotype can occur, like forward mutation, reverse mutation, and a mutation that changes a mutant back into wild type will be reverse mutation. And missense mutation is a mutation that is substituted that alters a codon in the messenger RNA, resulting in the a base is substituted that alters a codon in the mRNA, resulting in different amino acid in the protein product. So like you can see, serine is converted into leucine, and this will be missense mutation. And similarly, nonsense mutation will be mutations that terminates the protein product, like the serine is converted into a stop codon. Like you can see the protein is terminated now, and now this is a truncated protein. So this will be nonsense mutation. Silent mutations are also there, and silent mutations means when there is change in the DNA and in the protein, there is no change. You can see no change in the protein at the protein level. So this will be silent mutation, even though the mutation is there, the point mutation is there in the DNA. And neutral mutation, they are mutations that alter the amino acid sequence of the protein but does not change its function, as replaced amino acid is chemically similar, or the affected amino acid has little influence on the protein function. So we already have talked about this, that the neutral mutations are those mutations which have which have little or no effect on the overall function of the protein, like an acidic amino acid converts into acidic, a charged amino acid converts into a charged, a hydrophobic converts into a hydrophobic amino acid. But it will be like more effective, like it will have a drastic effect if a hydrophobic change into a hydrophilic, or a charge into neutral amino acid. So that will have drastic effects, and that will not be neutral then. So neutral mutation is with perspective to the phenotype actually. And loss of function mutation, and that is completely that the mutation that give rise to complete or partial loss of normal function, that is structure of a protein is so altered that it no longer works correctly. Mutation can occur in regular regulatory regions that affects transcription, translation, splicing of the protein. So they will be like frequently recessive, and we have already talked about how they could be recessive. And next is the gain of function mutation, and they produces an entirely new trait, causes a trait to appear in inappropriate tissues or inappropriate times in development. So a gain of function mutation also could occur. And conditional mutations are important. Conditional mutations are expressed only under certain conditions, like high temperature, if a temperature is too much high, they give rise to to certain types of mutations, and those mutations only depends on certain conditions. We have already talked about this in detail in the previous class, like there could be permissive conditions, restrictive conditions, and these permissive conditions means that the body like functions in a normal condition, and when the temperature rise, so it will give rise to certain mutations, and the function is now like at high temperature cell death will occur, or the function will be like stopped. So at that condition will be restrictive condition, and permissive conditions are the normal conditions for that mutation. So certain inteins have been identified which splice out at certain permissive conditions, permissive temperatures. So normally the inteins, they splice out from the protein, from the peptide, and leading to if the at other temperatures, like at restrictive conditions, the improper protein synthesis will occur due to the other temperatures. So the inteins will not leave the protein, and the improper function of the protein will occur. So these are the conditional mutations which we have talked about earlier. Up till now, if you have any question, if you want to discuss anything, please let me know. No, sir, we got it. Okay, that's good.
Okay, that's right. So after that, lethal mutations, they cause death of an organism, like a mutation that is too crucial for the life. And there are certain mutations that are suppressor mutation, and we have also talked about this in the previous slide, in the previous class. Like suppressor mutation will be double mutant, like this will be a mutation that suppresses some other mutation in the same vicinity or in the same genome. So organism with suppressor mutation is double mutant but exhibit the phenotype of unmuted, like wild type. So normally it will looks like it is normal, but that will mean that a mutation at one location, like if this is a DNA and here some mutation occurs, so here some another mutation will occur, and this mutation will suppress the effect of this mutation. So this is like this will be double mutant. So one mutation has occurred here and the other mutation has occurred here. So this will be suppressor mutation. So the phenotype, we can see the normal individual, but this individual has two mutations. So one suppresses the other mutation. So this mutation will be known as suppressor mutation. And causative effects के लिहाज से, like we can classify the mutations based on the causative effects, like spontaneous mutation. So spontaneous, what would be the spontaneous mutation that result from natural changes in DNA? And induced mutation, that is environmental, chemical, radiation, any environmental agent that increase the rate of mutation above the spontaneous is called a mutagen. Somebody who will explain this phenomena, like what is the difference between spontaneous and inducing mutation? Any volunteer? So that I could know like where we are standing actually. से इंड्यूस्ड म्यूटेशंस जो हम करवाते हैं, जो बाहर से कोई म्यूटेंट ऐड हो जाए या कोई अल्टरेशन आ जाए उसमें, उसकी कंपोजिशन में, और Hijab, you are स्पॉन्टेनियस right. नेचुरली। स्पॉन्टेनियस में उसमें स्टिमुलस सर की जरूरत नहीं पड़ेगी ये। जी सर। रबिया इज स्पॉन्टेनियस okay. जो सर रबिया स्पॉन्टेनियस and hijab, okay. Kinza, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से होते हैं, और जो चेंजेस की वजह से। जी। एनी अदर पर्सपेक्टिव कोई ये तो हम सारे इसी तरह समझ रहे हैं ना, अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं कि जो नेचर की वजह से हो और जो इंड्यूस्ड हो। तो अब कोई बता सकता है सर कि नेचर की वजह से किस तरह होंगे? जी शफीक बताएं प्लीज। सर जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होगी ये ओवर द टाइम एवोल्यूशन के लिए होगी। कौन करेगा? एवोल्यूशन के लिए होगी, लेकिन कौन करेगा? सर ये अडेप्टेशंस के एनवायरमेंटल जिस तरह चेंज हुआ उसी तरह अडेप्टेशंस के लिए बॉडी के अंदर डीएनए में म्यूटेशन आएंगे। किस तरह आएंगी म्यूटेशंस? सर ये इन विवो होगा और जो इंड्यूस है वो इन विट्रो होगा। रबिया, इन विट्रो एंड इन विवो। शफीक आप क्या कह रहे थे, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एनवायरनमेंट चेंज होता है तो इंडिविजुअल के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं वो उसके अंदर म्यूटेशन डेवलप कर सकती है ताकि वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं। किस तरह होती हैं चेंजेस? लाइक एक सीक्वेंस है एटीजी, तो एटीजी किस तरह कन्वर्ट होगा किसी और सीक्वेंस में? एसीजी में किस तरह कन्वर्ट होगा? कलीम यू वांट टू? जी सर इसमें जैसे कि रेप्लिकेशन प्रोसेस होते हैं, इसमें अगर चेंजेस आ जाए डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, तो इंड्यूस्ड में किस तरह होते हैं? इंड्यूस्ड में हम बाहर से कोई केमिकल जैसे म्यूटेशन अगर इंटर हो जाए। सर इंड्यूस में तो इवन के अल्ट्रावायलेट रेस भी म्यूटेशन कॉज कर देती हैं कि वो एटी या टीटी का आपस में क्या नाम है लिंकेज कर देती हैं। हाँ, और स्पॉन्टेनियस?
सर स्पॉन्टेनियस में मुझे लगता है कि कोई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते होंगे जो जाके पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके चेंजेस करते होंगे नहीं, बेसिस तो करने वो उन फैक्टर्स को अगर हम डिटेल में देख लें तो ये इंड्यूस्ड वाले भी तो फैक्टर्स इन्वॉल्व है ना। सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की सर वो होती है, उसके अंदर इंटरप्शन आती है सर स्पॉन्टेनियस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ से आ गए? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की। अच्छा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, लेकिन इन्होंने करना क्या है? लाइक व्हाट कुड बी द, ये तो जो हम समझ रहे थे ना, लाइक बाय डेफिनेशन पूरी क्लास ये समझ लें, बाय डेफिनेशन स्पॉन्टेनियस मीन नेचुरल और इंड्यूस्ड मीन सम म्यूटेजन इज देयर। लेकिन as a like biotechnologist, like a bioinformatician, like you are now in bioinformatics, you are a bioinformatician now. So as a bioinformatician, what you think how the like A is converted into C or C is converted into G, like how that occurs, like G is converted into A, how that occurs actually? Like if that is spontaneous या induced, दोनों हो, दोनों में result same ही होगा। आप समझ रहे हैं पूरी क्लास? रिजल्ट ने सेम यस होना है, लाइक स्पॉन्टेनियस हो या इंड्यूस्ड हो। ए ने कन्वर्ट होना है सी में, या ए ने कन्वर्ट होना है जी में, या टी ने कन्वर्ट होना है जी में। सो हाउ दैट अकर्स एक्चुअली? सो स्पॉन्टेनियस किस तरह होगा? सर डीएनए ट्रांजिशन और रेप्लिकेशन के दौरान ट्रांसफर। जो एरर्स होंगे लाइक हाँ न्यूक्लियोटाइड बेसिस में बनने में, तो वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाएगी ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है जब यू आर राइट। क्या थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर दें इसको शफीक, हिजाब को एक्सप्लेन करने दे, इसके बाद आपने बताना है मुझे। ओके ठीक है सर ओके जी। सर वो डीएनए रेप्लिकेशन में न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन और डिलीशन किसी भी तरह या थोड़ा सा उसका बाहर आ जाना किसी स्ट्रैंड का, तो उससे उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता ना, वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अच्छा, में आएगा। और इंड्यूस्ड में क्या होगा? सर इंड्यूस में कोई केमिकल फैक्टर बाइट से फॉरेन एजेंट अगर हाँ, मतलब उसमें एक्ट करेगा फॉरेन तो। एजेंट आ जाएगा, उसने भी डायमर क्रिएट कर देना है, या कोई और हम आगे यही पढ़ेंगे, कोई और चेंज कर देना है, तो पॉलीमरेज ने तो वही रीड करके गलत रीड करेगा ना, तो दोनों में फिर फर्क क्या हो गया? शफीक, यू देयर? यस सर जी जी जी। सर वो ये था कि जो डीएनए पॉलीमरेज के अंदर प्रूफ रीडिंग एबिलिटी होती है Exactly. तो Now hijab, Shafiq, we are like going towards like in the right direction. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस सर हाँ, अच्छा, अब ये समझ लें प्लीज क्लास। अब इसके बाद आप लोगों ने ये नहीं कहना, लाइक मैं एक दफा ये चैट देख लूं। रसल में डिएमिडेशन, एग्जैक्टली ठीक हो गया। पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म वर्क ना करें, ठीक हो गया। अच्छा, अब यू आर इन द राइट डायरेक्शन। होल ऑफ मैंने चैट भी देख लिया है। अब ये देखें, अब हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड को। किस तरह करेंगे? स्पॉन्टेनियस हमने एक थ्रेश होल्ड रखना है। यहां पे आपको अगर नजर आ रहा है ना, ये पॉइंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक्रीजेस द रेट ऑफ म्यूटेशन। योर रेट ऑफ म्यूटेशन जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट। लाइक एक म्यूटेजन है और वो इससे पहले हमारे कॉन्सेप्ट हैं कि पॉलीमरेज जब डीएनए को रेप्लिकेट करता है तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलीमरेजेस दे रेप्लिकेट while inducing some mutations there, like error prone like mutation polymerases होते हैं, fidelity कम होती है, तो उन्होंने क्या करना है, कोई म्यूटेशन इंड्यूस कर देनी है, कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देना है। ठीक है, सो उसको हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे। हम एक थ्रेश होल्ड रख लेंगे कि मींस 1000 बेसिस में 1 न्यूक्लियोटाइड गलत होना, दैट इज नेचुरल। ठीक है, तो हमने ये कहना है कि अगर कोई म्यूटेजन है और वो म्यूटेशन क्रिएट करें 1/1000, तो उसको भी हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे, उसको हम इंड्यूस नहीं कहेंगे। लेकिन एक म्यूटेजन है, वो म्यूटेशन क्रिएट कर रहा है 3/1000 mutations, so that will be induced in the context of this thing that increases the rate of mutation. समझ आ रही क्लास? यस सर। सर इन दोनों में बस इसी चीज का डिफरेंस आएगा कि और भी कोई मेजर डिफरेंस है? सर Okay. मेन डिफरेंस में ये होना चाहिए कि
इंड्यूस में रेट ऑफ म्यूटेशन इंक्रीज हो जाता है rather than spontaneous. एग्जैक्टली सो इंड्यूस्ड में हम ये तो हम ऑलरेडी समझते हैं ना कि नेचुरल मींस नेचुरल, सो व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल, ठीक है। सो उसका ये मतलब है कि पॉलीमरेज जो म्यूटेशन कर रहा है ना, हम उसको बैक वो रख लेते हैं, एक थ्रेश होल्ड रख लेते हैं, उससे ज्यादा अगर करे तो दैट विल बी इंड्यूस्ड। आइदर कोई केमिकल हो, आइदर कोई रेडिएशन हो, या कोई और फैक्टर हो, या स्ट्रेस हो, या कोई और कंडीशन हो, ठीक है, लाइक टेम्परेचर हो, कोई और कंडीशन हो, ठीक है। सो इंड्यूस्ड विल मीन दैट विल बी मोर देन द थ्रेशहोल्ड, उस थ्रेशहोल्ड से ज्यादा म्यूटेशन अगर हो दैट विल बी कॉल्ड एज इंड्यूस्ड। उसके फिर फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक एक नॉर्मल पॉलीमरेज है और वो 1 से ज्यादा म्यूटेशन क्रिएट कर रहा है, नॉर्मल पॉलीमरेज 1 कर रहे हैं और हमने कोई और पॉलीमरेज यूज कर लिया है जो 1 से ज्यादा म्यूटेशन क्रिएट कर रहा है। सो वो पॉलीमरेज भी हम उसके म्यूटेशन को इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहेंगे, इवन दो दैट हैज हमारे प्रीवियस डेफिनेशन के मुताबिक वो नेचुरल है, लेकिन दैट इज नाउ इंड्यूस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक अदर पॉलीमरेजेस। समझ आ रही है? यस सर। Yes sir, आ गई. ठीक हो गया, ठीक हो गया। Am I clear? Like any question, any point, any comment, any suggestion? अगर समझ नहीं आई so I will explain it again. ठीक है, समझ आ गई है? Should we go further? Yes sir. Okay, so let me check the chat as well. Okay, so Yes, that's sir. good. Okay, that's good. Okay, so and okay, so we have chats more chat. Okay, okay, so induced mutations, so there could be radiation, there could be chemical mutagens. So normally radiations हो सकते हैं, chemical mutagens हो सकते हैं। chemical mutagens में देख लें, so chemical mutagens could be base analogues, alkylating agent, deaminating agent, hydroxyl amines, intercalating agent, so they all are the chemical mutagens, ठीक है, and some are radiations. So they okay, so for radiations में x-ray, uv etc, they are radiations, so they are ionizing radiations, they break the covalent bond. अब अगर हम देख लें, so जो दो स्ट्रैंड के दरमियान है वो कौन सा बॉन्ड है, दो स्ट्रैंड के दरमियान होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे आपने ये बात याद रखनी है कि व्हाट दे डू, दे ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह होते हैं, लाइक दिस इज द डीएनए और दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड, दिस इज द अनदर डीएनए स्ट्रैंड, इनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो कौन से बॉन्ड्स होंगे, इनके दरमियान बॉन्ड्स तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना। सो रेडिएशन ने क्या करना है, रेडिएशन ने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है, दिस बॉन्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे दे ब्रेक दी कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड नॉट द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये जब कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, सो व्हाट इट विल डू, सो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, बल्जेस विल क्रिएट, इस तरह के बल्ज क्रिएट होंगे, ठीक है। सो इंक्लूडिंग दोज इन डीएनए एंड इन द लीडिंग एंड इज द लीडिंग कॉज ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैव अक्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड किल सेल्स एट हाई डोजेज। अगर बहुत ज्यादा डोज से हो एक्स रेडिएशन या यूवी या कोई और रेडिएशंस हो, सो दे किल द सेल्स। यूवी कॉज purines pyrimidines to form abnormal dimers bonds and bulges in the DNA strand occurs। ठीक है, समझ आ गई है? Yes sir. Okay, and okay, let me check the chat. Okay, that's good. So इसमें जस्ट ये बात याद रखने वाली है कि यहाँ पे हमने ये सिर्फ समझना है कि रेडिएशन ने क्या करना है, कोवेलेंट कोवेलेंट जो बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। Okay, and chemical mutagens are of different sorts. One of the type was base analogues. बेस एनालॉग्स वो केमिकल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए के वो उनकी तरह हों, लाइक 5 bromouracil, it will have the same structure
and अब ये 2-aminopurine जो है, they will have the same structure with the normal nucleotides. अब देखें 5-bromo-uracil को देख लें. So 5-bromo-uracil, the thymine देख लें, thymine and 5-bromo-uracil, they have same structure, but यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे methyl group लगा हुआ है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है. So and इसमें एक और भी difference है कि it can shuffle within the two structures. Like ये 5-bromo-uracil का enol form है, OH यहाँ पे होगा, enol form, and this is the keto form. ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ी हुई आप लोगों ने. So this is the keto form and this is the enol form. ठीक है. So hydroxyl group है और यहाँ पे like C and O, C double O and C double bond O, and this is C. So this is the keto group and this is the enol group. So 5-bromo-uracil can exist in both states. So this is important, like chemical with structure similar to any type of the 4 standard bases of DNA. DNA polymerase, अब issue क्या है? The DNA polymerase cannot distinguish these analogues with the normal, like the DNA polymerase will not distinguish between thymine and the 5-bromo-uracil. इसमें दोनों में वो differentiate नहीं कर सकता polymerase. So differentiate जब नहीं करेगा, they may be incorporated into the newly stranded DNA molecules. अब 5-bromo-uracil है, इसका structure thymine की तरह है. So अब एक डीएनए सीक्वेंस में एडेनिन है, उसके सामने थायमीन लगाना है, तो थायमीन की जगह ये 5-bromo-uracil भी लगा सकता है पॉलीमरेज, क्योंकि सेल के अंदर ये मौजूद होगा, सो इट कैन बाइंड इट देयर. एंड अब अगर एनालॉग्स ऑफ थायमीन, दिस pyrimidine है, ये 5-bromine atom at carbon number 5 and can incorporate in DNA and can base pair with adenine. अब ये जो 5-bromo-uracil है, ये एडेनिन के साथ भी बाइंड हो सकता है और गोवानिन के साथ भी बाइंड हो सकता है. लाइक अब अगर ये एक अगर कीटो फॉर्म है तो इट विल बाइंड विद ए. अगर ये इनोल फॉर्म है, इट विल बाइंड विद जी. इसकी समझ आ गई यहां तक? एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट? शुड आई रिवाइज, आर इट्स ओके? आगे समझ. That's good. Okay, and next is common keto form जो है, ये देखें, ये keto form of 5-bromo-uracil है. It can bind with adenine. Now this is like we were talking about, like pyrimidine and purine will bind. So keto form में ये adenine के साथ bind कर रहा है. But in enol form it will bind with guanine. ठीक है. सो एडेनिन के साथ भी बाइंड कर सकता है, गोवानिन के साथ भी बाइंड कर सकता है. और ये इसने किसको रिप्लेस किया था? इसने थायमीन को रिप्लेस किया था. तो थायमीन विल बाइंड विद एडेनिन. सो एडेनिन के साथ अगर बाइंड करें, सो दैट्स राइट, दैट्स ओके, बट इट विल बाइंड विद गोवानिन. सो गोवानिन के साथ जब ये बाइंड करेगा तो नेक्स्ट साइकिल में गोवानिन के सामने सी आएगा. So now TA is converted into CG. This is how mutations occurs. So tautomerization को समझ लें. This is actually, they are actually tautomers. Tautomers क्या हैं? Like एक stereoisomers हैं. Stereoisomers एक like functional group जो है वो यहाँ लगा हुआ है, दूसरे में यहाँ लगा हुआ है. So that can occur. But tautomer, wait for a while, is in all, does for similar is cytosine. No, in enol form, this is not like in enol form it will be similar to cytosine. In both form it will be similar to thymine. Like in enol form or in keto form, दोनों form जो हैं वो thymine की तरह हैं. ठीक है. लेकिन ये जो अगर enol form में होगा तो ये इसके सामने like दूसरे स्ट्रैंड पे क्या ऐड होगा? गोवानिन ऐड हो जाना है. लेकिन अगर ये कीटो फॉर्म में है, सो एडेनिन कैन बाइंड देयर. ठीक है. सो
यहाँ पे अगर हम देख लें, tautomerization is a concept like tautomers are structural isomers. Wait. Okay, so tautomerization, they are structural alteration between two forms, the keto and the enol form, and they are also known as constitutional isomers, same chemical formula, different bond connectivity. Now, if you can see, they have same chemical formula, but the bond connectivity जो है वो different है. ठीक है, सो केमिकल फार्मूला सेम होगा. अब अगर हम म्यूटेशन को एग्जैक्टली देख लें जो हमने 5 ब्रोमो यूरासिल के केस में देखा, सो दिस इज 5 ब्रोमो यूरासिल, 5 DBU, डी मींस डी ऑक्सी. सो अगर हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं, एक में T है एंड द सेकंड वन हैज A, सो the T can be replaced with the 5 bromouracil because the polymerase can add 5 like when it replicates this strand, it can add, the polymerase can add 5 bromouracil instead of T. Once this 5 bromouracil has been added, now the polymerase will misread it and can add, if that is in enol form, it can add guanine there. And once the guanine is added in the next cycle, in the front of guanine, what will it bind? C, it will bind with C. So now initially that was TA, now that has been converted into CG. Let me check the chat. Okay, so tautomerization, like this is actually they are actually, the two structures are actually tautomers. They are constitutive isomers, and constitutive isomers, they will have chemical formula, same chemical formula, but they have different bond connectivity, and this is actually this is actually refers to tautomers and tautomerization. Okay, this D is deoxy, means this is DNA, so deoxyribose sugar होते हैं ना, so D means deoxy. ठीक है, so ये nucleotides होंगे, they are deoxy. You have already studied about dideoxy, deoxy and ribose sugar. RNA में ribose होते हैं, DNA में deoxy होते हैं, और आपने अगर सेंगर पढ़ा हुआ है तो वहां पे deoxy भी का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, is it clear? Sir. G. Okay, so like we have discussed this thing, the same will occur with the GC. GC ने convert होना है, like how it can be converted into AT. We already have discussed this thing in the CG. अब सिर्फ इसमें एक चीज like note करने वाली है. Sorry. So इस चीज में सिर्फ एक चीज नोट करने वाली है कि 5 ब्रोमोयूरासिल जब ऐड होगा तो TA कन्वर्ट हो गया CG में, लेकिन अगेन जब 5 ब्रोमोयूरासिल ऐड हो गया तो GC दोबारा कन्वर्ट हो गया AT में. So it means that this could be reversible. Difference between tautomers and isomer, stereoisomers, like what is the difference between them? Like they are like structural alteration between two forms, like keto or enol form agar ho to wo like, and that is the specific example of tautomer. Or stereoisomer kya hota hai, wo just spatial arrangement of functional groups hota hai, like OH एक side पे है तो वो like that is in levo form, so and dextro form, so उसमें वो those are structural isomers. और like spatial arrangement जिसमें हो, like space में जो arrangements हो उनकी. अच्छा, और the tautomers are actually constitutive isomers and they have same chemical formula and but different bond connectivity. ये bond connectivity बहुत important है. Structural stereoisomers में bond connectivity same होती है. ठीक है, so ये हमने cover कर लिया था. नो सर, ये डायग्राम आज आपने एक्सप्लेन करनी थी. Okay, so let me check first the attendance हो गई. हाँ, attendance ठीक है. Okay, so we should start from here actually.
Okay, अब यहाँ पे देखें इस diagram को. So you will see like how mutation occurs. Like if this is a double stranded DNA, एक में T है, दूसरे में A है. So how it could change? So the polymerase will read this A and place 5 bromouracil instead of T. क्योंकि T और A के structure same है, the polymerase will confuse Bu like bromouracil with thymine. So like it will place it there, thymidine, so it will place it there. And after that, the polymerase will read 5-bromouracil. We have talked about the tautomerization, the two tautomers actually, the tautomeric structures. So it can place guanine instead of like A. Now, when G is there, in the next cycle, replication cycle, like in front of G, there will be C. So now initially that was TA, and now that has been converted into CG. समझ आ गई है? It's clear? Yes, sir. Okay, and same is the case with if that is GC and the in front of G, it should be like C, and the polymerase will misread it, and it can place like 5-bromouracil in front of G because it can bind 5-bromouracil with G, like same as here. It can bind G with this, and but if this is G, it can place 5-bromouracil there, and after that, if, in the next cycle, in front of 5-bromouracil, it can place A. Like it has the affinity for A, it has the affinity for like for G. So now and it will be similar to T. ठीक है, ये हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि like here it will be similar to like 5-bromouracil with similar to T, and it can bind with G or it can bind with A, and in the and initially when that was GC, now it can be AT now in the final product. So the same is the case with if this is double stranded DNA, GAC, and that is CTG. Now, if we can see the CAG when it replicates, this strand when replicates, so in front of A, the 5-bromouracil can come. It's like here, the 5-bromouracil is there, and when the replication cycle now, in the next replication cycle, it will be okay. Now here, this will be okay, and like here, at the 5-bromo, so this bromouracil, CBG will form, and in front of CBG, now it can convert into CGC, and here again this will be like CBG, and this will be like normal, and now this will be like CGC. So now you can see in all these products, only this product will be like this will be changed, because initially that was GAC and CTG. Now this is CGC and CCG. Now, so the GC and AT has was converted into GC. So this is how like errors or like mutations occur in the DNA, like by the polymerase. So and transition, and these are actually all this stuff we are talking about is about transition. This is not transversion, and like how it is transition, like T will be converted into C, and this is pyrimidine, and purine can be converted into purines. So this is again purine. So this is pyrimidine conversion, purine conversion. So this will be the examples for transition, and this is not actually transversion. This is not transversion actually. Am I clear up till now? Yes, sir. Yes, sir. कोई एक्सप्लेन कर देगा, कोई फॉर इंस्टेंस कोई एक्सप्लेन कर देता कि अगर जिसको समझ नहीं आई सो वो आपके लैंग्वेज से शायद समझ आ जाए, शायद आप इजी एक्सप्लेन कर दें, कोई भी एक्सप्लेन कर दें. Please volunteer, any volunteer.
सर मुझे तो समझ ही नहीं आई। आपको समझ नहीं आया तो आप तो अभी कह रहे थे समझ आ गई है। सर आपकी आवाज बहुत दूर से आ सर ये वाले साइकिल की समझ नहीं आ रही है। अच्छा, किसको समझ आ गई है? कोई भी एक्सप्लेन कर दें, फिर उसके साथ ही डिटेल बात हो जाती है ना। मेरी आवाज सर दूर से आ रही है। आ रही है सर अब समझ सर। ठीक है। हाँ, असल में मैं दूर भी बैठा हुआ हूँ ना, पेशावर बैठा हुआ हूँ, तो आवाज दूर से आनी है। चले, कोई भी बता दें। सर इसमें आपने ये बताया कि जो 5 ब्रोमोयूरेसिल है वो थायमीन से थायमीन जैसा है, वो उसको रिप्लेस कर सकता है। तो एग्जैक्टली जब ये वाले स्ट्रैंड्स जब सेपरेट होते हैं तो इसमें जो ए है वो रिप्लेस हो जाएगा 5 ब्रोमोयूरेसिल से, क्योंकि जो यहाँ पे जो टी है वो उसको रिजेंबल करता था, लेकिन उसकी जगह 5 ब्रोमोयूरेसिल हो गया, और इस तरह आगे वो हाँ, वो पॉलीमरेज उसको मिसरीड कर देगा। जी जी, यस सर। ठीक है। फिर फिर आगे जो है और वही ट्रांजिशन कौन 5 सी होगी ये? टी और सी वाली, क्योंकि ठीक है। सर आगे जाके ग्वानिन अटैच हो जाता है उससे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। 5 ब्रोमोयूरेसिल से फिर ग्वानिन आके लग जाता है, इसलिए। ठीक सर है। ये ट्रांजिशन में बताया हुआ है ना, प्यूरिन प्यूरिन में कन्वर्ट होगा तो ए जी में कोई कन्वर्ट होगा, अच्छा। जी ए में कन्वर्ट होगा। तो सर यहाँ पे ये जी सी में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों? हम्म सर ट्रांजिशन में आपने बताया ना, पायरिमिडीन पायरिमिडीन में कन्वर्ट होता है, प्यूरिन प्यूरिन में होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो प्यूरिन यहाँ पे ए है, ए जी में होगा, जी ए में होगा, ये प्यूरिन आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात हो रही है। सर ये इस साइड पे, राइट लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, इस साइड की जी बात हो रही है। जी सर ये नीचे। अच्छा, अब जी जो हाँ, है ये यहाँ पे सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो जी प्यूरिन सी में कन्वर्ट पायरिमिडीन हो हो। रहा है। अच्छा, जी सी में कन्वर्ट हो रहा है, ये कह रही हैं? जी सर। हाँ, अच्छा, ये देख लें। ओके, ये इस बात को देख लें प्लीज। और किसको समझ नहीं आ रही है अगर इस तरह है? लाइक सर दिस इज इम्पोर्टेंट मुझे एक्चुअली। बात समझ नहीं आई सर, ये जो राइट साइड पे जब ये बी के साथ चेंज होके जी लग गया। हाँ, यहाँ पे नहीं सर, ये जो पूरा ये बना है, सर ये इधर थोड़ा राइट पे जाए सर, थोड़ा राइट पे जाए। राइट पे ये यस सर, ये सर इसके साथ जी ही क्यों आया सर? मतलब वहां पे हमने देखा था कि वो थायामीन की तरह भी है, तो फिर सर समझ नहीं आई सर इस बात की, ये जी क्यों। अच्छा, चलें, होल ऑफ द क्लास एक दफ़ा इसको फिर से देख लें। मैं जस्ट यहाँ पे बता देता हूँ कि लाइक यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्चुअल सिचुएशन क्या थी। हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है थायमिडीन, ठीक है। अच्छा, एक और एनालॉग है इसका, बिल्कुल इसी की स्ट्रक्चर की तरह, एंड दैट इज 5 ब्रोमोयूरासिल, मींस के 5 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन है, ठीक है। एंड दैट विल बी लाइक यूरासिल, बट दिस इज ब्रोमीन, एंड दिस इज लाइक जस्ट लाइक थायमिडीन, लाइक इसकी तरह है, और यहाँ पे लाइक मिथाइल ग्रुप की जगह ब्रोमीन है। सो पॉलीमरेज ने क्या करना है, इसको इसको पॉलीमरेज ने समझना है कि दिस इज जस्ट लाइक थायमिडीन, ठीक है। तो इसने थायमिडीन की तरह इसको समझ देना है, ठीक है। और लाइक दैट विल कंसीडर दिस एज थायमिन। अब क्या होगा कि इफ दैट इज इट हैज 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म्स में पॉसिबल है, लाइक इन द इनोल फॉर्म एंड इन द कीटो फॉर्म। अब ये कीटो फॉर्म है और ये इसका इनोल फॉर्म है। अगर इनोल फॉर्म है तो पॉलीमरेज ने इसको टी कंसीडर किया है, एंड नाउ इन द इनोल फॉर्म इट कैन बेस पेयर विद जी, ये गुआनिन के साथ बेस पेयर कर सकता है। इन द कीटो फॉर्म इट इज जस्ट लाइक नॉर्मल, अगर ये ये टी है,
ठीक है। सो टी भी ए के साथ बाइंड कर रहा है और कीटो फॉर्म में भी ये ए के साथ बाइंड कर सकता है। दिस इज द बेसिस एक्चुअली। नाउ इफ वी कंसिडर दिस डायग्राम, ये डायग्राम थोड़ी सी है, ये डिटेल से है, तो उसके डिफरेंट लाइक पॉसिबिलिटीज दिखाए गए हैं कि हाउ इट कैन लाइक go differently and in different scenarios it will work differently, like see this like अब पहला वाला क्वेश्चन जो किया था तो वो ये था कि टी ए जो है वो लाइक सी जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस कुड बी पायरामिड, दिस कुड बी ट्रांसवर्जन। बस ये हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि ये डबल स्टैंडर्ड है, टी ए है, और रिजल्ट क्या बना इसका, टी कन्वर्ट हुआ है सी में और ए कन्वर्ट हुआ है व्हाट में, इन जी। So C conversion in T conversion in C is pyrimidine, both are pyrimidine, and A conversion in G, that is purine conversion. Okay, so as a whole, it is actually transition, like from TA, it converts to CG. And similar the case with this one, G A में convert हुआ है, ठीक है, और C जो है वो T में convert हुआ है, so that is again transition from GC to AT. एक और बात भी याद रखें कि लाइक अगर हम ये देखें कि टी ए से सी जी बना है, अगेन फिर जी सी से दोबारा ए टी बना है, सो दिस कैन बी रिवर्सिबल, सो दैट मीन्स इट लुक्स लाइक दैट इज अ रिवर्सिबल थिंग, लाइक इट कैन रिवर्स बैक इनटू द सेम स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि 5 ब्रोमोयूरासिल के सामने लाइक बी के सामने जी किस तरह लगेगा, सो हम पहले यहाँ पे बात कर चुके हैं कि लाइक 5 ब्रोमोयूरासिल ये अगर इनोल फॉर्म में है तो इसके सामने जी लग सकता है, लाइक इट विल बाइंड विद जी, ठीक है। और यहाँ पे वही हो रहा है कि बी के सामने एक पॉसिबिलिटी है कि जी भी लगे, बी के सामने जो है वो ए भी लग सकता है, लाइक बी के सामने ए भी लग सकता है, एंड इन व्हाट केस इट कैन बाइंड विद ए, like here in the keto form it can bind with here, and सेकंड के अगर फॉर इंस्टेंस टी है तो पॉलीमरेज ने क्या करना है, लाइक इसको लाइक एक ए के सामने टी लगाना है, तो इस टी की जगह वो 5 ब्रोमोयूरासिल लगा देता है, ठीक है। ए के सामने टी लगाना है तो टी की जगह 5 ब्रोमोयूरासिल लगा दिए, बिकॉज बोथ हैव सेम स्ट्रक्चर्स, the polymerase misread the 5 bromouracil and like it will confuse 5 bromouracil with thymine, ठीक है, समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, कोई एक्सप्लेन कर देगा या like is now good for all? यस सर। यस सर। समझ आ गई है? It's good. यस सर, आ गई है। ओके, फरीन आपको समझ आ गई है? हाँ ठीक है, Yes, ठीक हो sir. गया। ओके, दैट्स गुड। एंड फातिमा आपको समझ आ गई है? Yes, sir. आगे. That's good. Okay, so we should go further. So 2-aminopurine, this is another analog. This is analog of adenine. And normally pairs with thymine. इसने क्या करना है, एनालॉग है एडेनिन का, नॉर्मली ये थाइमिन के साथ पेयर करेगा, लाइक थाइमिन के साथ पेयर करें तो दैट इज नॉर्मल, बिकॉज एडेनिन एंड थाइमिन दे पेयर लाइक, और इसका एनालॉग भी आ जाए तो पेयर करेगा। मैं मिस पेयर विद साइटोसिन, लाइक साइटोसिन के साथ भी ये मिस पेयर कर सकता है, लाइक दे कैन बाइंड विद साइटोसिन एज वेल, causes transition mutation as well, and the same case is like it was causing previously. So अब यहाँ पे देखें GTC है and the other one is CAG, और ये एडेनिन का असल में एनालॉग है। so यहाँ पे देखें कि T के सामने एडेनिन आना था, लेकिन पॉलीमरेज ने एडेनिन को लाइक 2-aminopurine को मिसरीड करके, लाइक इसको कंफ्यूज करके उसके साथ एडेनिन के साथ, सो यहाँ पे प्यूरिन 2-aminopurine लगा दिया है। सो नाउ 2-aminopurine now when it can mispair with cytosine, और अब रिजल्ट क्या होगा, like this is TA, the TA has been converted into CG. So this is now again, this is this T has been converted into C and A has been converted into G, and this is actually transition.
So, and this is actually the second representation of the same thing. TA has been converted into that is A has been messered with 2-aminopurine, and the 2-aminopurine can mismatch with mispair with cytosine, and now resultantly the TA has been converted into CG. And again, if the same process occurs with the CG is now converted into TA, and that's it. And this is again the transition. The pure pyrimidine will be converted into pyrimidine. Purines were converted into purines. And base analog, to conclude the two base analogs, we have actually mutagens, like different mutagens. So the base analog is one of the agents that produce like mutations, and both base analogs that produces transition mutations, if that is like 5-bromouracil or 2-aminopurine, both they produce like transition mutations. And mutations by base analogs can be reversed by treatment with the same analog or different analog. So अगर mutation को reverse back करना है, treat with the same analog or with the different analog, so it will be reverse back. You try that and you will find that they are reversible. And the second of the mutagens are alkylating agents. Alkylating agent is the second of the agents that cause mutations, point mutations. So these are the chemicals that donate alkyl groups like EMS, ethyl methane sulfonate, and this is actually carcinogenic. And that's formula is C3H8SO4, and this is actually the structure of EMS, ethyl methane sulfonate. So this will donate the ethyl group actually. So ethyl methane sulfonate, and what it will do, it adds ethyl group to guanine. So guanine के साथ इसने ethyl group को add कर, इस ethyl group को guanine के साथ add कर देना है, and produces 6-ethyl guanine which pairs with thymine. So इसने अब क्या करना है, mispairing करनी है किसके साथ, thymine के साथ. 6-ethyl guanine ने, guanine normally pairs with cytosine, but when ethyl group is attached with the guanine, it can mispair with thymine, and that leads to CG. Like अब ये देखें कि CG bond कर रहा था, C and G were bound and they were converted into TA. So CG were converted into TA, and again this is transition mutation. And next is also add ethyl group to thymine. अब ये EMS जो है ये guanine के साथ भी ethyl group को add कर सकता है, और thymine के साथ भी add कर सकता है to produce 4-ethyl thymine. So यहाँ पे 6-ethyl guanine बना रहा था, यहाँ पे 4-ethyl thymine, which then pairs with guanine. अब ethyl guanine thymine जो है ये guanine के साथ फिर like bind pair कर सकता है. like यहाँ पे 6-ethyl guanine thymine के साथ pair कर सकता था, तो 4-ethyl thymine जो है वो normal guanine के साथ भी like pair कर सकता है, leading to like TA has been converted into CG. And this is again the transition. So a mutation produced by EMS can be reversed by additional treatment of EMS. So EMS जो है mutations जो है अगर दोबारा addition कर ले EMS से can be reversed back, because the CG was converted into TA. Now the TA can be converted back into CG. Like अगर यहाँ से भी आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि they can be reversed back. Like CG was converted into TA. The TA is now converted back into CG. Is it clear? Anybody could explain if that will be good for others as well. कोई explain कर देगा? Yes, sir. जी बताएं. सर इसमें ये बताया कि ये एक ऐसा केमिकल है जो डोनेट करता है अल्काइल ग्रुप्स को, तो वो ग्वानिन के साथ एक इथाइल ग्रुप लगाएगा और वो प्रोड्यूस कर देगा 6-ethyl guanine जो पेयर कर लेगा थायमीन के साथ. क्योंकि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ होता है उसकी बेस पेयरिंग, बट यहाँ पे वो थायमीन के साथ कर लेगा और इस तरह ट्रांजिशन हो जाएगी. और फिर नेक्स्ट है कि इथाइल ग्रुप जो है ना वो थायमीन में ऐड हो जाएगा और इस तरह 4-ethyl थायमीन बन जाएगा. और यहाँ पे फिर थायमीन जो है वो एडेनिन के साथ बेस पेयर की बजाय गुआनिन के साथ बेस पेयर बनाएगा और इस तरह ट्रांजिशन हो जाएगी. ठीक हो गया.
Okay, and इसको reverse back भी किया जा सकता है from like addition of like EMS, so we can reverse it back to the same status. ठीक है? Class, is it clear? Yes, sir. Okay. अलीजा आपको समझ आ रही है? Yes, sir. Okay. So next is mustard gas जो है वो, that is another alkylating agent. So like EMS and mustard gas are like, they are alkylating agents. Like अब यहाँ पे देखें, and like this is more explanation of the same thing. Like let me check the chat as well. Slide number 20. Okay, so okay, this was previous exam chat actually. Okay, so CG were converted into like, yeah, if you can see the 6-ethyl guanine that replaced with like G, and that has been converted into 6-ethyl guanine by EMS treatment, and it can now appear with the T, and the T in front of T, it could be A. Now the CG has been converted into TA, and same is the case with this one. Like if you can see, the TA has been converted into CG by having like by treating with EMS, it will convert T into 4-ethyl thymine, and that will leads to CG transition from TA. And if you can see, this is guanine structure, and by treating with the EMS, the ethyl group has been, the alkyl group has been added with the guanine, and by making it 6-ethyl guanine, and now 6-ethyl guanine base pairs with thymine, like it will make 2 bonds, like now which initially with was G, and was that actually making 3 bonds with the cytosine, but now it can bind with thymine by making it 2 bonds. So it's GC conversion into AT, and same is the case with thymine. Thymine is like 4-ethyl thymine will be produced, and it will make 2 bonds with the guanine, and now like you can see that TA is being converted into CG, and that's it. And the next is deaminating agents. Deaminating agent, the amino group has been removed. Like this name, like it represents like this the strategy. And nitrous oxides are like, they are the deaminating agents. So nitrous oxide ने क्या करना है? This convert amino into keto group. Like this is amino group, and it will convert into keto group. The nitrous oxide will convert that into keto group. So that the cytosine, if this is the cytosine, if that is with treated with the nitrous oxide, it will convert cytosine into uracil. Now the uracil has a keto group instead of like amino group. So and what will happen? The CG will convert into TA. I don't need to go into explanation again. So the CG will convert into TA, because now this is uracil, and uracil will bind with the like adenine, and this was cytosine. So cytosine naturally will bind with G, and the uracil, it will bind with A, and that will like in the final product, and in the initial product, if we compare the two, so CG has been converted into TA, and same is the case with this one. So AT has been converted into GC, and we will be talking about this in detail. Like this is amino, like this is, if that is okay, wait. Okay, so cytosine changes into uracil, and like cytosine change into uracil, and adenine changes to hypoxanthine. If you can see, that is adenine. Adenine has this amino group, and that's like this is a keto group, and this is adenine has been converted into hypoxanthine, which then pairs with cytosine, and ultimately AT is converted into GC. And deaminating agents are there, and the deaminating agents, like the same deaminating agent, what it will convert guanine. This is guanine, and it will convert that into xanthine. Like
adenine was converted into hypoxanthine. This is not xanthine, like this is hypoxanthine, and this is one oxygen is there, one oxygen element is there, and here there is no oxygen. So this is hypoxanthine. Both are like pure. That both are like purines, and like here you can see the guanine has been converted with again the nitrous oxide. It will convert into xanthine, and in the xanthine, now ultimately what will happen? The GC will be converted into AT, and xanthine also pairs with thymine, so it can pairs with thymine, and that will happen like the conversion from GC into AT. And if you if we can conclude the nitrous oxide, what nitrous oxide was doing first, the cytosine was converted into uracil, adenine was converted into hypoxanthine, and guanine was converted into xanthine. So if we can conclude this, nitrous oxide produces exclusively transition mutation. Again, transition mutation. These mutations can be reversed back with nitrous oxide, with extra treatment with nitrous oxide, and that's it. यहाँ तक समझ आ गई सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया. So any question, any point of view, any discussion, and like any comment? Or it is clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. So next is hydroxylamine. Hydroxylamine, these are specific base modifying agents like mutagens. And hydroxylamine means this hydroxyl and this is amine, NH2OH, like this is hydroxyl, this will be like any of the hydroxylamine. So it will again, this will be transition mutation, CG will be converted into TA. So these are specific base modifying mutagens. So here, if you can see cytosine, if we treat with the hydroxylamine, so it will add hydroxyl group here, like this is with the amino group. So this is okay. So add hydroxyl group to the cytosine to produce hydroxylamine cytosine. So it is producing hydroxylamine cytosine, which pairs with adenine instead of guanine. So by making like cytosine, like to produce hydroxylamine cytosine, and now hydroxylamine cytosine will produce will mispair with adenine instead of, like, it will not base pair with like guanine. And this now what will happen? The CG will be converted into TA, and that's again the transition, and acts only on cytosine, thus cannot revert back to the mutation produced. समझ आ गई कि why we cannot like इसको back क्यों नहीं कर सकते, convert क्यों नहीं कर सकते, convert back, because only cytosine is converted. So ये सिर्फ और सिर्फ cytosine पे work करेगा. So कोई और like G पे work नहीं करे, like T पे या A पे work नहीं करेगा कि like इसको convert back कर, like अगर ये A पे भी work करता तो that can be convert back into the mutation can be converted back into the like normal. So that's how like it works. So this is not reversible actually now. समझ आ गई है? Yes, sir. Explain कर दें कोई अगर, please. कौन explain करेगा? आयशा मसूद. आयशा, आपको आवाज आ रही है? सर मैं बताऊं? जी हिजाब आप बता दें. सर इसमें ये बताया हुआ है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा वो साइटोसिन पर जाके अटैच हो जाएगा. साइटोसिन जो है फर्दर आगे गवानीन में कन्वर्ट होने की बजाय एडेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है ये कन्वर्ट नहीं बेस पेयर करेगा, बेस लाइक पेयर करेगा. जी. और ये सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता. हाँ, रिवर्स नहीं, जो म्यूटेशन आ गई तो वो म्यूटेशन रिवर्स नहीं हो सकती. लाइक जो एंड प्रोडक्ट है, लाइक CG is converted into TA, so TA will not go back into CG by adding more hydroxylamine. ये इस तरह नहीं होगा, कन्वर्जन बैक नहीं होगा. सर जी फातिमा कोई लाइक जी.
नो जी मायदा बताएं। सर, हाइड्रोक्सिल अमीन जो है वो साइटोसिन के ही बेस पे जाके चेंज कर रहा है, इसलिए ये म्यूटेशन रिवर्ट बैक नहीं हो सकती। हाँ इससे ये पहले रीजन हम है। पढ़ चुके हैं ना, हाँ इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि दो बेसिस को चेंज कर रहा है, तो यस यहाँ पे सर, सिर्फ और उसकी तो सिर्फ आ गई समझ। साइटोसिन को चेंज करेगा। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन को करेगा, ये एडेनिन को चेंज नहीं करेगा। कि अगर एडेनिन को भी करता है तो वो रिवर्ट बैक होने के चांसेस थे। एक्सक्यूज मी ठीक है। सर, जी 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 सर जी ये जो हाइड्रोक्सिल अमाइन साइटोसिन है, क्या इसका स्ट्रक्चर थायामीन से मिलता होगा, इस वजह से वो एडेनिन के साथ बाइंड कर एग्जैक्टली जाएगा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, कोई और क्वेश्चन? यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जी फातिमा। नेचुरली होता है या हम जब इन विट्रो सीक्वेंसिंग करते हैं तब भी हम चेंज कर सकते हैं ये यूज करके? हाँ हाँ म्यूटेशंस जब इन हमने खुद करवानी हो तब भी हम यही प्रोसेस सारा यूज करते हैं? हाँ असल में ये इसका मसला ये आता है कि जो हम खुद करवाना चाहते होते हैं ना, लाइक बिलियंस ऑफ बेसिस हैं, लाइक योर क्वेश्चन इज वैलिड, लेकिन इसको समझ लें कि हम खुद करना क्या चाह रहे होते हैं। लाइक बिलियंस ऑफ बेसिस हैं, पूरा क्रोमोसोम है, और मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक एडेनिन चेंज हो। ठीक है, एक साइटोसिन चेंज हो। तो एक साइटोसिन को चेंज करने के लिए मैं हाइड्रोक्सिल अमीन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोक्सिल अमीन ने रैंडमली चेंज कर देने बहुत सारे साइटोसिन्स को, और मैं सारे साइटोसिन्स को चेंज नहीं करना चाह रहा। मैं प्रिसाइजली सिर्फ एक जगह पे एक जो साइटोसिन है सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है, 5063 नंबर जो साइटोसिन है उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं अगर हाइड्रोक्सिल अमीन यूज करूंगा तो उसने तो रैंडमली कोई भी साइटोसिन चेंज कर देना है जो म्यूटेशंस कॉज करेंगे। आई डोंट वांट दैट, लाइक व्हेन आई वांट, मैं अगर म्यूटेशंस करवाना चाह रहा हूँ, इंड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, सो दिस इज नॉट लाइक, ये जो अब अभी तक बात हो रही है, दिस इज नेचुरल, लाइक नेचर में क्या किस तरह म्यूटेशंस आती हैं। बट इफ वी वांट टू इंड्यूस म्यूटेशंस, मैं एक चीज को लाइक साइटोसिन को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, सी जी बेस पेयर है और मैं उसको टी ए में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, या हाँ टी ए में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, सो मैं हाइड्रोक्सिल अमीन यूज नहीं कर सकता या कोई और वो नहीं यूज कर सकता, बिकॉज दैट विल बी रैंडम एक्चुअली। समझ आ गई? सर मेरा क्वेश्चन है। यस सर। हाँ ठीक है सर नेचुरली, बोला। सर आपने बोला है कि अगर मैं इसको खुद से करवा रहा हूँ तो ये रैंडमली बहुत सारे को चेंज कर देगा, तो नेचुरली एक को कैसे करता, बहुत सारे को क्यों नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरली ये होता है कि नेचर में म्यूटेशंस किस तरह आ रही हैं वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, कि नेचुरली भी ये रैंडम ही करेगा। ठीक रैंडम ही है, करेगा और एक से ज्यादा को भी कर सकता है। हाँ एग्जैक्टली लेकिन अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो मैं रैंडमली नहीं करना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं ये स्ट्रेटजी यूज नहीं कर सकता। ये हम ये समझना चाह रहे हैं कि नेचर में म्यूटेशंस किस तरह आती हैं। ठीक है, कि ठीक अगर है सर। पॉलीमरेज इतना प्रूफ रीड है, सारी चीजें हैं, हाउ द म्यूटेशंस अकर, सो उसमें वो चीजें हम पढ़ रहे हैं कि पॉलीमरेज को ये समझ नहीं आएगी कि दिस इज एक्चुअली थायमीन, दिस इज एक्चुअली साइटोसिन, या ये हाइड्रोक्सिल अमीन ने इसको चेंज किया हुआ। वो ये चेंजेस उस तरह पर आते हैं कि उसको मिसरीड करेगा। ठीक है, सो उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी हुई उसमें आपने पढ़ा होगा कि हाउ फिडिलिटी होती है पॉलीमरेज की। सो वन इन 1000 एक न्यूक्लियोटाइड को ये चेंज कर देगा, गलत लगा देगा अगर प्रूफ रीड नहीं है। इवन अगर प्रूफ रीड है तो भी ये इन अल्काइलेटिंग एजेंट और हाइड्रोक्सिलामीन्स और इस तरह के जो बेस एनालॉग्स हैं, सो ये जो है ये असल में दिस आर द मेन कॉजेज फॉर म्यूटेशंस। ठीक है, और ये सारे जो हैं दे कैन बी अल्काइलेटिंग, सॉरी दे कैन बी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, क्योंकि पॉलीमरेज कर रहा है। सो अगर हम ये देख लें कि अगर ये पॉलीमरेज कर रहा है तो इसको फिर हम म्यूटेशन नहीं कह सकते, लेकिन हम पहले ये बात कर चुके हैं कि एक स्पेसिफिक पॉलीमरेज एक स्पेसिफिक लेवल के लिए म्यूटेशन, एक स्पेसिफिक लेवल तक म्यूटेशन कॉज करेगा, उसको हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे। लेकिन अगर वो उस लेवल से ज्यादा है तो इट मींस के दैट इज इंड्यूस्ड। तो अगर बेस एनालॉग्स आ गए
और वो पॉलीमरेज अपने लेवल से ज्यादा एरर्स क्रिएट कर रहा है, सो दैट मींस कि दैट इज इंड्यूस्ड वन, देयर आर लाइक म्यूटेशंस देयर। ठीक है, समझ आ गई है? एम आई क्लियर? यस Yes, सर। sir. दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, एंड कलीम आपको समझ आ गई है? यस सर। ओके, किंजा इज खामोश टुडे। किंजा समझ आ रही है? यस सर, समझ आ रही है, मैं सुन रही हूँ, मैं नोट कर रही थी। इट्स गुड। उसामा आपको समझ आ गई है? जी सर, आ गई है समय। आप घर चले गए हो कि नहीं? यहाँ पे लाहौर में हो? बस सर आज जाना है, अच्छा, चलो। वो टिकट नहीं मिल रही। ओहो, ओके। और मुंतहा आपको समझ आ रही है? मुंतहा इज देयर। मुंतहा, ओके, नो वरीज। निमरा शबीर, निमरा? यस सर, आ रही है समझ। यस सर, मुझे भी आ रही है, मेरा माइक ऑफ था, मैं बोली जा रही थी, आई एम सॉरी। चले, दैट्स गुड, ठीक है, नो वरीज, नो वरीज। ओके, सो नाउ लाइक अगर एंड दिस इज एक्चुअली नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब इसको समझ लें, क्योंकि आप लोग या हम लोग जब लैब में जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि एथिडियम ब्रोमाइड है, डीएनए को हाथ ना लगाएं, ये जेल को हाथ ना लगाएं, ग्लव्स के बगैर हाथ ना लगाएं। सो लेट्स सी हाउ द those Ethidium bromide they cause mutation. This is one of the perspective that can be mutagenic. So इसको हम इंटरकलेटिंग एजेंट्स में पढ़ेंगे। इंटरकलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो इंटरकलेट कर जाते हैं। इंटरकलेट से क्या मतलब है? that come in the DNA and that fit there in the DNA like base pairs and that intercalate, like specifically ये word भी इसके लिए है कि intercalate कर जाता है DNA के अंदर। So अब इसको समझ लें कि how these intercalating agents work. So these are actually thin plate-like hydrophobic molecules insert themselves between adjacent base pairs. So अब यहाँ पे देखें, ये this is the representation of these intercalating agents. अब यहाँ पे देखें कि this intercalates within the base pairs, like within the adjacent base pairs. So अब यहाँ पे ये intercalate कर गया है। अब intercalation के बाद क्या होगा? लाइक इट इंटरकलेट्स देयर एंड हम इसकी वजह से हम डीएनए को विजुअलाइज करना चाह रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में दैट इंटरकलेट्स विद इन द बेस पेयर्स, वहां पे इंटरकलेट कर गया है। तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा कि पॉलीमरेज जब इसको रीड करेगा तो कोई भी रैंडम कोई रैंडम बेस वहां पे लगा देगा, ऐड कर देगा पॉलीमरेज। रैंडम बेस लगाने के बाद अब क्या होगा कि नेक्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल में उस बेस के सामने कोई उसका करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा। लाइक इफ दैट इज जी, सो जी के सामने सी लग जाएगा। आफ्टर दैट द रिजल्ट इन अब क्या होगा कि दिस विल ऐड दिस इज ये फ्रेम शिफ्ट क्रिएट कर देगा बिकॉज दिस इज इंसर्जन। ये इंसर्जन म्यूटेशन है, दिस इज म्यूटेशन बाय एडिशन। न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, देखें अब न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है वो ऐड हुआ है। अब यहाँ पे म्यूटेशन बाय डिलीशन, डिलीशन किस तरह हो सकती है? इस न्यूक्लियोटाइड के सामने इंटरकलेटिंग एजेंट लग गया है और नेक्स्ट स्टेज में जब रेप्लिकेशन साइकिल हो, सो इंटरकलेटिंग एजेंट दैट लॉस्ट देयर फ्रॉम देयर एंड ये न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ से गायब हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ से, बिकॉज इन द नेक्स्ट साइकिल यहाँ से अगर इंटरकलेटिंग एजेंट निकाल दें सो देयर विल बी नो न्यूक्लियोटाइड इन फ्रंट ऑफ दैट एंड दैट विल बी लाइक दिस, सो नाउ वहाँ पे यहाँ पे वी विल गॉट डिलीशन। नाउ द न्यूक्लियोटाइड हैज बीन डिलीटेड, like this TA and this T is deleted now. ठीक है, सर ये डिलीशन वाला रिपीट करते हैं। डिलीशन वाला इस तरह होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं और दिस इज द टेम्पलेट डीएनए, दिस इज द न्यू डीएनए, इंटरकलेटिंग एजेंट ऐड हो गया है किसी भी न्यूक्लियोटाइड के सामने। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के सामने मींस रेप्लिकेशन साइकिल में न्यूक्लियोटाइड के सामने वो इंटरकलेटिंग एजेंट ऐड हो गया है। नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट साइकिल? ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे,
नेक्स्ट साइकिल में ये जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, ये लाइक अगर ये निकल गया तो अब ये क्या होगा, इसके सामने न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, इसके सामने तो कुछ भी, क्योंकि ये जब निकल जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सो दैट विल ऐड लाइक ये डिलीशन होगी एंड यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा. सो इन द फाइनल प्रोडक्ट इनिशियली यहाँ पे TA था एंड नाउ वी हैव नो TA देयर. ठीक है, ये वाला TA है और ये वाला TA नहीं है. So this is actually the deletion. So possibilities, these are the possibilities that intercalating agent like it can do. उसमें सर ये बात समझ नहीं आई, फिर CG किधर गया, मतलब वो अगर निकल गया तो चले T रह गया था, तो फिर सर A किधर गया? कौन सा दो डिफरेंट प्रोसेसेस बताया कि इंसर्शन भी हो सकती है और डिलीशन भी हो सकती है. एग्जैक्टली ये दोनों डिफरेंट है जी, दो डिफरेंट है, ऊपर वाले में इंसर्शन हुई है, नीचे वाले में डिलीशन हुई है. एग्जैक्टली ये यहाँ तक जो है ये इंसर्जन है यहाँ तक, और यहाँ ये वाला देखें म्यूटेशन बाय एडिशन, दैट इज म्यूटेशन बाय डिलीशन. तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं विद इंटरकलेटिंग एजेंट्स. ठीक है सर. ठीक है. सो नेक्स्ट इज loss of intercalating agent can result in deletion, for example. और अच्छा, intercalating agent के examples कौन कौन से हैं? Proflavin is the example of intercalating agent. Ethidium bromide, ये आपने बहुत सुना होगा. Ethidium bromide हम जेल में यूज कर रहे होते हैं to visualize gel. So Ethidium bromide is another intercalating agent and that is like the golden example for that. समझ आ गई है? Is clear? Yes sir. Yes sir. ओके एंड अगर हम इसको देख लें, सो यहाँ पे आपको दिखाया गया है इंटरकलेटिंग एजेंट्स जो है वो यहाँ पे बाइंड कर रहा है एंड दैट्स इट. ओके, सो यहाँ पे हम जब जेल्स यूज कर रहे होते हैं तो जेल्स में हम इथिडियम ब्रोमाइड यूज कर रहे होते हैं. ये विजुअलाइजेशन जो है, जो हमें बैंड नजर आ रहे होते हैं, दैट इज दीज इंटरकलेटिंग एजेंट. इंटरकलेटिंग एजेंट को अगर हम ट्यूब में सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ये इथिडियम ब्रोमाइड को और हम यूवी लाइट में देख लें, सो दैट गिव अस. आ रही है? सर कैन यू हियर मी है. नाउ? यस ओके. सर आपके आवाज में लैग आ रहा है. फिर नहीं आ रही आवाज. सर बिल्कुल भी नहीं आ रही आपकी आवाज. सर आवाज बिल्कुल चली गई. ओके, अब दिस इज अच्छा, अभी ठीक है? यस सर आइए. ओके, दैट्स गुड. ओके, अब जस्ट मैं ये बता रहा था कि ओके, सो अब ये बता रहा था कि दिस इज एथिडियम ब्रोमाइड है वाइल में, और ये आप देखें कि जो भी लाइक सोल्यूशन हो और वो इस तरह एम्बर बॉटल में हो या लाइक इस तरह बॉटल में हो, सो दैट मींस कि दैट थिंग इज फोटो रिएक्टिव. सो उसको इस तरह लाइक डार्क बॉटल में रखते हैं जो चीजें फोटो रिएक्टिव हों. सो अब ये देखें, या थर्मल सेंसिटिव लाइक फोटो सेंसिटिव हो. सो अब देखें, अगर इसको इस तरह ट्यूब में डालें और यूवी लाइट में देख लें, सो दैट विल ग्लो. अगर हम इसको डीएनए के साथ मिक्स करें तो उसको जेल पे रन करें तो हम इससे डीएनए को विजुअलाइज कर सकते हैं, बिकॉज इट इंटरकलेट्स इन द डीएनए. जहां जहां पे इंटरकलेशन होगी तो वहां वहां पे नजर आएगी. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको रेडनेस शो नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इन बैंड्स में रेडनेस शो होगी, बिकॉज द इथीडियम ब्रोमाइड हैज बीन इंटरकलेटेड इन द डीएनए. ये डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है. ठीक है, इट हैज पॉजिटिव चार्ज, डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज, तो उसकी वजह से भी ये इंटरकलेट कर जाते हैं एंड दैट्स गो इनटू द लाइक इसमें जेल में रन करें, दैट विल गो एंड इट विल मूव इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड yeah, that will give us color because of the Ethidium bromide. एंड हम बैंड्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, हम डीएनए को एक्चुअली विजुअलाइज कर सकते हैं. एज अ इल्यूमिनेटर यूज करते हैं.
एग्जैक्टली ये इल्यूमिनेटर भी यूज कर सकते हैं, लाइक इसको हम ये कह सकते हैं कि लाइक हम विजुअलाइज कर सकते हैं डीएनए को। ये हमें इस जेल में अब ये नजर आ रहा है कि डीएनए कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। सो हम डीएनए के साथ मिक्स कर देंगे एथिडियम ब्रोमाइड को, और फिर जेल पे रन करना है। तो जेल पे जब रन करेंगे सो डीएनए विल मूव इन द डायरेक्शन, एंड ये लाइक ये जब मूव करेगा सो जहां जहां पे बैंड नजर आएंगे डीएनए होगा, वहां वहां पे हमें कलर नजर आएगा। ठीक है, एम आई क्लियर? यस सर। लाइक कलर नहीं, फ्लोरेसेंस एक्चुअली।